नमस्कार एंटरप्रेन्योर्स, उम्मीद है आपका बिजनेस खूब तरक्की कर रहा है और आगे बढ़ रहा है। मैं हूं वर्तिका सिंगल और बीफ ऑफ बिजनेस स्टाइल के इस नए वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स और फीडबैक आ रहा था इस चीज़ के लिए कि बेकरी का बिजनेस कैसे शुरू करना है। बहुत सारे लोग हैं जो बेकरी का बिजनेस घर से शुरुआत करना चाहते हैं, बट उनको नहीं पता कि क्या क्या चीज़ें लगती हैं बेकरी शुरू करने में, कैसे चलाना है, कैसे आगे बढ़ाना है। तो मैंने सोचा क्यों ना हम किसी ऐसे होम बेकर से मिले जो इस बिजनेस में 7 साल से भी ज्यादा से है और उसको शुरू से लेकर आखिर तक उसने सब पूरा जर्नी देखा है एंड शी नोज कब कहाँ पर कैसे क्या चीज करनी है। तो आज हम मिलने वाले हैं पूनम जैन से, जो कि ला मैडेलाइन पतीसरी बैंगलोर में बहुत ही फेमस ब्रांड है बेकरी का एंड दे आर वेरी वेरी फेमस फॉर देयर बेल्जियन चॉकलेट केक, चीज केक, तिरामिसू केक्स एंड पेस्टो सॉस। तो चलिए बहुत जल्दी से चलते हैं और मिलते हैं पूनम जैन से। मेरा नाम पूनम जैन है। मैं आई एम अ होम बेकर और मैं अपने बेक्स ला मैडलाइन पतीसरी के नाम से प्रमोट करती हूँ। आई हैव बीन इन दिस बिजनेस फॉर 7 years और मैं फेमस हूँ बेल्जियन चॉकलेट केक्स के लिए, चीज़ केक्स के लिए, पेस्टो एंड स्मॉलर मिनी केक्स, बाइट साइज केक्स के लिए। आपका बेकरी यहाँ पे कहाँ पर है? मैं घर से ही काम करती हूँ, तो मैंने अपने घर में एक छोटा सा सेटअप कर रखा है अपने एक्स्ट्रा रूम में, जहाँ से मैं बेक करती हूँ। मैं करंटली बैंगलोर में हूँ, इंदिरा नगर के बहुत पास एक एरिया है यमरूर, उसमें। तो जहाँ पे भी मैं होती हूँ वहीं उसी एरिया को मैं केटर कर पाती हूँ। Generally, for viewers, just to understand, what is the difference between home baker and जो ये bakery shop जो होती है? काफ़ी फ़र्क है एक्चुअली। एज अ होम बेकर मेरे पास बहुत फ्लेक्सिबिलिटी रहती है कि मैं आज बेक करना चाहती हूँ, कल नहीं चाहती हूँ। मेरी फैमिली है, मेरे ऑब्लिगेशंस हैं, तो अकॉर्डिंग टू माई विम्स एंड फैंसीज मैं डिसाइड करती हूँ कि मैं वीकेंड्स पे ज़्यादा बेक करना चाहती हूँ, वीकडेज में और काम करना चाहती हूँ। बट अगर आपका एक बेकरी है तो आपका एक बहुत बड़ा कमिटमेंट होता है। आपको पहले तो इफ़ यू डोंट हैव अ लैंड और कमर्शियल स्पेस ऑफ योर ओन, तो आपको रेंट करना पड़ता है, विच इज़ अ वेरी बिग फिक्स्ड कॉस्ट। सेकेंडली, एज अ बेकरी आपका कस्टमर फेसिंग शॉप होता है, तो उसमें आपके पास कोई चॉइस नहीं है। इट हैज़ टू बी ओपन, इट हैज़ टू सर्व एंड कॉन्स्टेंटली आपको केक्स अपग्रेड करने पड़ते हैं, बिकॉज पीपल वॉन्ट समथिंग न्यू एवरी डे एंड it's a very difficult job, it's a very big commitment versus a home bakery. होम बेकरी में क्या है कि मेरा इन्वेस्टमेंट बहुत कम है, फर्स्टली क्योंकि रेंट तो है ही नहीं, और रूम में मैंने अपना एक स्टेनलेस स्टील का टेबल लगा दिया, उस पर अपना होम बेकिंग का अवन विच इज़ कॉस्ट वाइज बहुत कम है, वो रख लिया। स्टाफ जो मेरा घर पे है वही मैं अब्जॉर्ब कर लेती हूँ और खुद भी काम करती हूँ। लेकिन अगर आपकी बेकरी है तो उसमें आपको स्टाफ चाहिए, आपका इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर बिल बहुत हाई आता है एंड केक्स में भी काफ़ी फ़र्क होता है इन द सेंस कि अगर आपकी बेकरी, आपका कॉस्ट इतना हाई है कि आपको बहुत केक्स बेचने पड़ते हैं टू कवर अप द कॉस्ट, तो समवेयर योर क्वालिटी कैन गेट कॉम्प्रोमाइज, नॉट नेसेसरी। एंड होम बेकिंग में आप एक केक बना रहे हो दिन में, शायद ज़्यादा भी, लेकिन एवरीथिंग इज अकॉर्डिंग टू द कस्टमर, एक दिन पहले बनता है। बेकरी ज़्यादा केक्स बनाने के लिए टेक्निक्स यूज़ करती है, तो दे मेक इट पहले ऑल्सो एंड सो बहुत फ़र्क भी हो जाता है क्वालिटी में। तो यू हैव टू डिसाइड व्हाट इज इट दैट यू वांट, कि तुम घर से अपना सेटअप करना चाहते हो या बेकरी करना चाहते हो, बट घर से भी पॉसिबल है। So, आपने कब शुरू किया था ये बेकरी? मुझे टेक्निकली अबाउट 7 years हो गए हैं, विद मे बी 2 or 3 long breaks of 8 months. Right. But it's a slow journey in building your network. इन 7 years में हम 2 बार घर चेंज कर चुके हैं, सो दिस इज माई 3rd हाउस। तो हर एरिया में यू हैव टू री एस्टैब्लिश योरसेल्फ, सो इट्स लाइक स्टार्टिंग योर बेकरी अगेन, बिकॉज पहले मैं साउथ बैंगलोर में थी एंड नाउ आई एम इन सॉर्ट ऑफ सेंट्रल बैंगलोर। तो साउथ बैंगलोर के कस्टमर्स जो बहुत ही आपसे लॉयल थे वो आपके पास रहेंगे, बट बाकी लोग नहीं ऑर्डर करेंगे। तो आपका कस्टमर बेस बढ़ता है लेकिन घटता भी है एज यू चेंज एरियाज।
जब आपने शुरू किया था बेकरी, वाज इट आउट ऑफ योर पैशन, हॉबी, और यू सॉ मार्केट गैप कि यार ये मार्केट गैप है, ये होना चाहिए, इस साइड को मैं कुछ शुरू कर सकती हूँ, किस लाइक व्हाट वाज द रीजन? Actually, it's a very funny story. By education, I am a master's in finance. Oh. And I didn't study cakes. But जब शादी से पहले मैं घर पे थी तो I did not take up a job. I wanted to spend time with my family. So इस वजह से मैं अपने डैड के बिजनेस में थोड़ा इन्वॉल्व थी. But I had a lot of time. And my friend has a bakery in my hometown. तो she said कि तुम आ जाया करो, टाइम स्पेंड कर लेंगे, एंड व्हाई डोंट यू हेल्प मी इन केक्स. सो आई स्टार्टेड एंजॉयिंग इट. आई सेड ओके, रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी नहीं है तो व्हाई नॉट, यू नो, लाइक ठीक है, वो डिसाइड करिए, वो सब कुछ करिए, आई जस्ट हैव टू एग्जीक्यूट. सो इट बिकेम अ वे टू स्पेंड टाइम विद माय बेस्ट फ्रेंड. एंड देन आई गॉट मैरिड एंड चेंज सिटीज. सो हमने ये ड्रीम देखा था कि हम सेम सिटी में शादी करेंगे और फिर हम अपनी बेकरी खोलेंगे. बट अनफॉर्चुनेटली वी आर इन डिफरेंट सिटीज. एंड देन शादी के बाद I wanted to continue cakes, but knowledge तो बिल्कुल भी नहीं थी क्योंकि मैं तो बेकरी में जाके बस हेल्प करती थी. So then I decided to professionally learn it. So मैंने एक कोर्स किया 3 months का to learn how to make cakes. And because I feel that अगर आप कोई चीज़ बेच रहे हो और अगर आपको पता नहीं है वो क्या है, then you should not. Right. Correct. Especially in food. Food is something where food is a science. So then I learned it, and then सीखते ही मैंने स्टार्ट करना चाहा, लेकिन हम बैंगलोर शिफ्ट हो गए. सो देन अगेन वी हैड सेटलिंग टाइम, एंड देन बैंगलोर वाज कंप्लीटली न्यू टू मी. आई डिडंट नो एनीवन हियर. सो टू अंडरस्टैंड बैंगलोर, टू सेटल इन एंड स्टार्ट टुक मी टाइम. आई थिंक काफी इंटरेस्टिंग स्टोरी है. सो आपका होम टाउन कहाँ पर है? औरंगाबाद, महाराष्ट्र. आप वो हमारे व्यूअर्स को बताएंगे व्हाट आर योर बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट्स बेकरी, लाइक या तो मेरे बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट्स मतलब आज 7 साल हो गए. आई हैव बीन यूजिंग जस्ट वन रेसिपी फ्रॉम द स्टार्ट, दैट इज बेल्जियन चॉकलेट ट्रफल केक्स, एंड दे सेल लाइक क्रेजी. मैंने इतने प्रोडक्ट्स ट्राई किए हैं बेचने, बिक जाते हैं, इट्स नॉट अ बिग डील, बट एनी पर्सन हु कम्स बैक वांट्स द बेल्जियन चॉकलेट केक. And one more thing, like I have personally tried it, that's pesto sauce, which is amazing. Like I have had different type of pesto sauce, but the one which you make, I think it's amazing. यही फर्क होता है in learning and selling versus seeing something on internet and trying your business. I agree, I completely agree. तो जब आपने finally decide किया YouTube course, आपने finally bakery सीखी and you thought कि अब मुझे शुरू करना है. So how did the whole journey look like? How did you start? How did you start getting customers? What about your brand? How did it all start? So I'm a very principled person. अगर मैं कुछ start कर रही हूँ तो I have to know everything. Everything has to be in order. So the first thing I started working on was my cost sheets. कि अगर मैं ये केक बनाती हूँ तो मुझे बताना चाहिए कि इसके ingredients क्या हैं, रेसिपी क्या है और कॉस्ट क्या है. अंडरस्टैंडिंग कि मार्केट में क्या अवेलेबल है, किस प्राइस में. तो आई स्पेंड एटलीस्ट 3 months इन मेकिंग माई कॉस्ट शीट्स एंड डिसाइडिंग माई एक्चुअली ब्रांड नेम कोर्स में ही डिसाइड हो गया था बिकॉज इट वॉज बेस्ड ऑन अ केक दैट आई लव अ लॉट. एंड व्हेन आई मेड इट एंड आई ट्राइड इट एंड आई सेड कि दिस इज गोइंग टू बी द नेम. So that happened and the cost sheets happened. And then when we moved here, I went about going to bakeries to see कि क्या मिलता है, क्या लोग खा रहे हैं. But one of the biggest things that I realized was कि केक की क्वालिटी इतनी ग्रेट नहीं है. अच्छे केक्स मिलते हैं, ऐसी बात नहीं है, बट लोगों को पता ही नहीं वो क्या खा रहे हैं. Like they are just buying because ये बहुत फेमस है तो खा लो. So I felt that I had an opportunity to create something that people might like. Because मेरे बहुत क्लियर था फ्रॉम द वेरी स्टार्ट कि मैं क्या बेचना चाहती हूँ. बट my husband kept telling me that you cannot decide what you want to sell, you have to try it out and let customers decide. But I was very adamant that I have to make a chocolate cake. And till date that is the one that sells the best. So when you started, how did you manage your suppliers कि मेरे को ऐसे suppliers ढूंढने हैं? And when you started baking, how did you talk about your cakes, your products, or how did you reach out to your customers or audience? So suppliers actually is a very hard problem to solve because जब तक आपके पास
सेल्स नहीं होती, वो आपको एंटरटेन नहीं करते हैं, और करते भी हैं तो बहुत एक्सपेंसिव देते हैं. सो इनिशियली व्हाट आई डिड वाज कि जो लोकल बेकिंग सप्लाई की स्टोर्स होते हैं, आई ट्राई टू बिल्ड माई रिलेशनशिप विद 1 or 2 इन माई एरिया इंस्टेड ऑफ गोइंग टू द वेंडर्स. मैंने वेंडर्स को भी फोन किया, बट वो नहीं एंटरटेन करते हैं. एंड इस बेकरी बिजनेस में वेंडर्स बहुत लिमिटेड है. सो ऐसा नहीं है कि आपके पास 15 वेंडर्स हैं जिनमें से आप थोड़ा, हाँ, you have 2-3 in every state, every city, and that's it. So I felt that it's better to establish a relationship with a local shop who over the year then started giving me discounts. And when my sales increased, that's when I reached out to vendors. And how about customers? How did you start reaching out to them? I did a free listing of my brand logo with the menu on Zomato. So मैंने शुरू में अपना एक मेन्यू बनाया बेस्ड ऑन प्राइसेस एंड आइटम्स दैट आई फेल्ट आई वांटेड टू सेल. और मैं जोमेटो में एक ऑप्शन है फ्री लिस्टिंग का, तो मैंने उसमें कर दिया. एंड इनिशियली मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं, वर्ड ऑफ माउथ ऑफ कोर्स ऑलवेज वर्क्स फॉर अ होम बेकर, बट माय फर्स्ट मोड वाज जोमेटो एंड इट वर्कड वेरी वेल फॉर मी. मे बी बिकॉज आई वाज इन साउथ बैंगलोर, जेपी नगर में, और वहाँ पे होम बेकर्स 7 years बैक इतने पॉपुलर नहीं थे. सो मेरे को बहुत जोमेटो से कॉल्स आने लग गई. सो और जैसे एक कॉल आती है, आई यूज्ड टू आस्क देम फॉर अ फीडबैक, और मैं उनको बोलती थी आप मेरे लिए रिव्यू लिखिए. सो मेरा रिव्यू रेटिंग स्टार्टेड फ्रॉम 3.5 एंड इट वेंट अप टू 4.3 बिकॉज ऑफ दिस. ऑल जेन्युइन, yeah. But I also tried selling on Zomato, but it didn't work out for me because as a home baker आपका cost, packing cost बहुत बढ़ जाता है, and आपके पास बहुत preparation time बहुत कम होता है. तो वो ट्राई करने की वजह से आपका रेटिंग गिर भी जाता है, क्योंकि अगर आपका प्रोडक्ट अच्छे से नहीं पहुंचता है तो लोग इमीडिएटली आपको रेटिंग. So from 4.3 it went down to 3.7 within 10 days of trying Zomato online. So pros and cons of both, yeah. So word of mouth and Zomato have been primarily what I've used so far. Right. So right now, do you have listing apart from Zomato or anything? Have you listed yourself? So मैं Instagram पे हूँ, मैं Facebook पे हूँ, Zomato पे हूँ, और Swiggy Minis पे I'm trying to get in. And having the advantage of staying in a society, I'm also on the chef group of the society. Okay. So chef group, what is this chef group? हर सोसाइटी में लोग, कुछ फेलो शेफ्स मिलके ग्रुप पोस्ट बना लेते हैं जिसमें वो पोस्ट करते हैं कि आज मैं क्या बना रही हूँ, और अगर लोग चाहते हैं तो वो खरीद लेते हैं. तो इसमें क्या होता है, छोटे छोटे स्मॉल बैचेस ऑफ प्रोडक्ट्स बनाती हूँ. आज मैं कपकेक्स बेक कर रही हूँ, 5 बजे अवेलेबल है इस प्राइस पे. तो लोग आपको ऑर्डर कर देते हैं कि मुझे 10 चाहिए, कोई बोलता है 20 चाहिए, कोई बोलता है 1. तो एज अ होम बेकर ये बहुत बड़ा एडवांटेज हो जाता है कि अगर मेरे पास एक बड़ा ऑर्डर है केक का, तो मैं थोड़े और एक्स्ट्रा केक्स बना लेती हूँ और बेचती हूँ. So do you think this online community like chef group is one? So I'm sure बाकी भी ऐसे काफी सारे ग्रुप्स होंगे, चाहे वो इंस्टाग्राम है, व्हाट्सएप है, फेसबुक है. So have they really helped you get your sales up? Or No. So like how has your Zomato has helped me and word of mouth has helped me and the chef group on the because food is something जो जब तक कोई पर्सन आपको रेकमेंड नहीं करे, लोग ट्राई नहीं करते. बेकर्स की कोई कमी नहीं है, हर गली में एक बेकर है. दिस इज द प्रेजेंट सिनेरियो. तो यू हैव टू हैव सम यूएसपी जिससे लोग कहें कि नहीं मुझे ये ट्राई करना ही है. एंड वो तभी होता है जब आपका कोई अपना बोलता है कि नहीं यू हैव टू ट्राई दिस. तो मैंने बहुत ऑनलाइन, इंस्टाग्राम से भी ऑर्डर्स आते हैं, बट इंस्टाग्राम में थोड़ा डेडिकेशन चाहिए, वेयर यू हैव टू कीप पोस्टिंग, मार्केटिंग थोड़ी चाहिए. एंड इफ यू कैन डू दैट, यस यू कैन गेट अ लॉट ऑफ ऑर्डर्स. स्विगी मिनीज में भी आपका प्रेजेंस आफ्टर सम टाइम बढ़ जाता है, बट आई एम इन एन इनिशियल फेज, सो आई कांट से दैट. So how did you find your USP? एक्चुअली मैंने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया था कि दिस इज द केक आई वांट टू बेक फ्रॉम माय हार्ट. The chocolate, Belgian chocolate cake and white chocolate raspberry cake, because these are my personal favorites. Okay. तो बस वही USP बन गया. Over the years लोग मुझे बोलते हैं कि आप ये बनाओ मेरे लिए, ये कुछ और बनाओ. तो उस वजह से
यू आर फोर्स्ड टू ट्राई थिंग्स. कई लोग, कई शेफ्स होते हैं जो बोलते हैं कि मुझे हमें ये बनाना है. एंड इनिशियली जब मैं मेन्यू डिसाइड करी थी तो आई ऑल्सो वांटेड टू पुट 30 थिंग्स इन इट. बट एज योर जर्नी ग्रोज यू रियलाइज कि पीपल डोंट वांट सो मेनी थिंग्स. पीपल वांट दोस फ्यू थिंग्स दैट यू आर गुड एट. सो वो केक शुरू से ही बस चल गया. सो उसके बाद मैंने चीज केक्स इंट्रोड्यूस किए, वो भी बहुत अच्छे चले. कुकीज करी. बट देन जैसे जैसे आप और चीजें करते हो तो आप थोड़े फोकस भी हट जाता है. सो देन यू हैव टू कीप कमिंग बैक टू व्हाट इज योर यूएसपी. So we are talking about your bakery. आप बताया like your family supported you everything. So now after the wedding, after your marriage, you're married and you have a kid. How difficult it is or how supportive your family has been during this whole time while you were setting up the bakery business, now continuing with it. How is it? Actually, it's been great. It was मेरे in-laws की वजह से ही I could start this. जब मैंने उनको बोला कि I want to do the course, they were the ones who said कि no, you go ahead. And Zomato and menu में my husband helped me. He told me, he gave me, he's the biggest critique I have. आज भी अगर मुझे कोई प्रोडक्ट लॉन्च करना होता है तो पहले मैं अपने हस्बैंड को ट्राई करवाती हूँ और वो उसमें 100 चीजें बताते हैं कि ये ऐसे है, ये वैसे है. सो यू नो ही वाज लाइक कि अगर आप प्रोफेशनली करना चाहते हो तो यू हैव टू शो पीपल दैट यू आर सीरियस. सो ही इज लाइक कि जब मैंने बोला कि मैं कैसे बेचूं केक, तो ही इज लाइक तुम्हारा ब्रांड लोगो है, ठीक है, वेयर इज योर मेन्यू, वेयर इज योर लिस्टिंग. तो मैं लिस्ट कैसे करूं? ही इज लाइक गो रीड ऑन द इंटरनेट, रीड व्हाट इज द लिस्टिंग, मेक अ मेन्यू. मैंने मेन्यू बना दिया. मेन्यू में ही इज लाइक इसमें तो इतने सारे वर्ड्स हैं, मेरा मन ही नहीं कर रहा पढ़ने का. ही इज लाइक वेयर आर द एस्थेटिक्स. सो every feedback I would be like, तुम तो मुझे encourage ही नहीं कर रहे हो, what is this? But that led me to make a nice menu. And then Zomato पे भी he told me how to do the listing. And he was the one who told me कि अगर तुम किसी को केक बेचते हो तो उसी वक्त पूछो how was the cake. अगर तुम उस वक्त पूछोगे और अगर वो खुश है तो वो लिख देंगे रिव्यू. अगर तुम 10 दिन बाद बोलोगे hey can you write me a review, कोई नहीं लिखेगा. So that's actually very. So family support has been in every direction. जब मेरी मदर इन लॉ यहाँ आती है तो वो भी मुझे हेल्प कर देती है केक बनाने में, because she feels so happy. That's very good to hear. And now you have a kid, like you have a daughter. So have there been like difficult times when you had to choose between your personal work or your professional work? Or actually home baking में सबसे बड़ा advantage ये है कि you can switch it off whenever you want. अगर मुझे पता है यू हैव टू बी प्लान्ड व्हेन यू हैव अ बेबी. ऐसा नहीं है कि आप एकदम से डिसाइड कर लो कि ये करना है वो करना है. बट अकॉर्डिंग टू माय डॉटर शेड्यूल इज व्हाट आई डू. सो यू हैव दैट फ्लेक्सिबिलिटी. या आई वांट टू बेक सपोज इन द मॉर्निंग और इन द इवनिंग. अब जैसे उसका स्कूल है सो आई नो दैट टिल 4 o'clock आई हैव टाइम. सो दैट्स व्हेन आई ट्राई टू प्लान माय बेक्स. बट बेकिंग ऐसा बिजनेस है कि देयर आर थिंग्स दैट यू हैव टू डू लास्ट मिनट. बट योर चाइल्ड बिकम्स योर फ्रेंड. एंड जैसे मेरी डॉटर मुझे हेल्प करती है केक्स में, सो इट्स एक्चुअली फन. द ओनली डिसएडवांटेज इज कि आधी चीजें वो खा जाती है. But that's also a good thing, na? She would also give, I think children would give you the most honest feedback. Yes. तो अगर बच्चे केक खा लें इसका मतलब केक बहुत अच्छा बना. Exactly, right. So we were talking about how you set it up. Do you remember any memory of your first order? How did it come? How was the feeling? Anything like you remember about it? Yes. So I have had first orders both in Delhi and Bangalore because when I started baking, when I learned the course, मैं दिल्ली में थी and I thought I will start my business here. तो because Bangalore में मैं नई थी तो I didn't know anyone and Zomato listing में थोड़ा time लगा. But I wanted, I will make it for you. And it took me 2 attempts and 24 hours to make a half kg cake because मैं इतनी नर्वस थी कि मैंने स्पंज के बीच में क्रीम इतनी ज्यादा डाल दी कि एक तो हाफ kg से turned out to be a 1 kg cake and before I could even assemble it वो slump हो गया because it had too much cream. And then I had to remake it. My God. So and then तब मुझे ऐसा लगा कि I think मुझे ये नहीं करना चाहिए because it requires a lot of patience. It requires a lot of discipline and
you can't mess around with food. Like food has to be good, otherwise people don't buy. Right. So I can never forget this first order of mine. Oh my god! And from there to Yes, here it's today, been a long journey. It's been and how has it been? It's very fulfilling. Yeah. When I think what motivates me is when people call and tell me that it was so amazing, we've never eaten something like that. I think that's You the know? best feeling when Yeah. your customers Yeah. say that to you. There is negative feedback also, and I think कोई भी negative feedback well नहीं लेता, but you have to decide how negative is the feedback, whether it's helping you grow or is it just an angry customer because of circumstances. Right. Right. So negative feedback could also be constructive if you learn a lot from Yes, it. absolutely. Right. And then there would be certain customers who would never be satisfied. Right? Yes. That's the journey of every business. So every feedback is not important. Right. I would now want to talk about like raw materials when it comes to bakery and when it comes to food. So food एक ऐसी चीज है which is like very sensitive. एक बार अगर customer का experience खराब हुआ, he's never gonna come back, right? So then when it comes to raw materials, say whether it is related to cake, cookies, how do you like generally do it nowadays? In a commercial setup, आपके पास बड़े refrigerators होते हैं जिनका आप temperature control करते हो 4 degrees पे -4 पे, but home में आप एक normal refrigerator use करते हो which has its limitations. So over the years I've learned that you have to make smaller quantities and make sure you sell it out. अगर नहीं बिकता है तो you have to throw it. Right. You cannot think of selling an old cake to anyone. Right. And raw material procurement is very easy. सब कुछ सब जगह मिलता है आजकल. You have to be willing to put that extra money in good quality raw materials. I think home bakery में वो है that because the USP is quality, you have to put like quality raw materials, everything about quality over money. Yeah. So how early do you prepare? Suppose आपके पास के लिए order generally कितना एक दिन पहले आपको कितने टाइम पहले order? I give a 3-day notice period at least for certain cakes and customized cakes के लिए longer. But raw material is something you can procure and keep पहले से. You can't bake anything, but raw material is perishable but storable. Like you need butter, you need oil, you need maida, you need chocolate. Right. So all these things can be stored for a pretty decent time, like 6 months at least. Okay. And a good thing to do is buy smaller packaging so that once opened you use it. So like for new entrepreneurs who are trying home bakery or who want to start, generally what would you suggest? Like to procure raw material, say 1 month in advance, or just keep it, or? Yeah, absolutely. You can procure it one time and check the expiry of all the products, note it down, know when they are expiring, and use it. Usually, a freshly bought product, देख के खरीदो कि कब manufactured हुआ है, and a freshly bought product lasts you good 6 months. Okay. Yeah. Right. So, and when we talk about raw material, so I think there would be a lot of brands when it comes to, I don't know, I have not much idea about like when it comes to chocolate, maida, whatever. So, do you prefer using say international brands or national? Does it something like that happen? हाँ वैसा होता है. It depends on आप कैसा केक बेचना चाहते हो, आपका एरिया कैसा है और कॉस्ट इफेक्टिव है कि नहीं. अब जैसे अगर मैं एक छोटे से सिटी में हूँ, बहुत ही छोटे, जैसे बैंगलोर में मुझे पता है स्पेंडिंग कैपेसिटी अच्छी है, लोग केक्स को जानते हैं, तो दे एक्सपेक्ट समथिंग ग्रेट, तो आई वांट टू गिव द बेस्ट, सो मैं बेल्जियन चॉकलेट यूज करती हूँ. बट अगर मुझे पता है कि मैं एक छोटे शहर में बेक कर रही हूँ जहाँ पे शायद लोगों को इतनी एक्सपोजर नहीं है, देन आई वुड यूज अ लोअर ब्रांड, अ गुड चॉकलेट बट अ लोअर कॉस्ट ब्रांड, क्योंकि वहाँ पे लोगों को बेल्जियन चॉकलेट से फर्क नहीं पड़ता. आप एक बेकरी की शॉप में जाओगे तो आपको एटलीस्ट 30 वैरायटीज मिलेंगी, सो यू हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स टू चूज फ्रॉम एंड यू हैव टू बाय अ फ्यू चॉकलेट्स टू डिसाइड कि आपको किसका टेस्ट अच्छा लग रहा है. यू हैव टू सेल व्हाट यू लाइक, सो दैट इज अ जर्नी. इट टेक्स टाइम टू डिसाइड कि आपको कौन सा खरीदना चाहिए. सबसे पॉपुलर चॉकलेट मोडे चॉकलेट है,
that is very cheap and very cost effective. तो काफी popular है home bakers में. Right. But it depends on what you want to really sell. And your audience, if it is price Yes. sensitive, then you Yes. have to Yes. do accordingly. So I think जो मैं अभी तक समझ पा रही हूँ, when it comes to bakery, I think more than you, it is about your customers, what they want, and then Absolutely. that's how you have to design or modify your Absolutely. आप अपना फ्लेवर पेयरिंग्स, आप अपना बेसिक जो आप सेल करना चाहते हो कर सकते हो, बट इन द एंड इट्स योर कस्टमर इफ ही इज कमिंग बैक फॉर मोर. अगर दैट इज द बिगेस्ट प्रूफ ऑफ व्हाट इज गुड. अगर वो कस्टमर आपको बस मैसेज करता है इट वाज गुड, इट कुड बी politically correct, but if he orders again it means that your product is good. When you start your home bakery, of course you would have started alone. Then do you have staff, you have people who help you out with your bakery, or how do you manage everything? Yes, you need help. I don't have a dedicated person who is only baking for me, but I have a house help whom I use in my baking. Right. So I have taught him a basic level of cakes and groundwork जो वो मेरे डेकोरेशन से पहले कर लेता है. बट यू नीड सपोर्ट बिकॉज आप जब बेकिंग करते हो तो आपके बर्तन बहुत हो जाते हैं, आपको बेक करने में टाइम लगता है, आपको डेकोरेट करने में टाइम लगता है, प्रेपरेशन टाइम बहुत होता है स्पंज बनाने में और डेकोरेशंस बनाने में, क्रीम बनाने में. सो यू नीड हेल्प. So when you started, what you used to have like a single kitchen for your daily food and for your bakery, or how was it? Yes, I started out with a small kitchen in which we would do our home food also, and non-cooking times is when we would bake. Okay, all right. And in general, like if somebody like you who has now established home bakery brand, how much staff do you need? Like, would be sufficient to cater to all sorts of orders and requests? See, if you are not going to be involved in the making of the cakes, then you need one person who is dedicated, plus a helper जो आपके cleaning कर दे. Right. Food business is something where cleanliness is very important. Right. So you need a dedicated person जो constantly आपका चॉकलेट गिर जाता है, शुगर उड़ता है, बर्तन हो जाते हैं हर 2 मिनट में. So you need a person who does all that. And you need एक person जो आपकी बेकिंग कर दे. जैसे मेरे केस में मेरा हाउस हेल्प केक्स बेक कर देता है, बेक कर लेता है और बेक कर देता है, तो मुझे सिर्फ लेयर और डेकोरेट करना पड़ता है. बट जो कॉम्प्लिकेटेड केक्स होते हैं वो मैं अपने आप करती हूँ, बेक भी और डेकोरेट भी. Okay, so I think one person is enough, like one dedicated staff you have, then you can manage your. Yes. There have been many times when I've done it myself without help too, and it is possible. Yeah, I think initially so you have to start it like that. How do you decide the menu, or how is the whole process of deciding the menu? Because as a customer it looks very easy कि हाँ यार सिर्फ I just have 10 options to choose from, but I'm sure there would be a lot of thought going behind. Yeah. So how is the whole process? Actually, I would say कि menu is something that's a journey. आप पहले जो फर्स्ट मेन्यू आप बनाते हो उसमें आप लिखते हो जो आप बेचना चाहते हो. फिर ओवर द मंथ्स एंड इयर्स आपको रियलाइज होता है कि ये 3 प्रोडक्ट ऐसे हैं जो लोग खाना ही नहीं चाहते, मैं जबरदस्ती उनको बेचती हूँ, तो आपको ऑर्डर्स ही नहीं आ रहे हैं, एंड इट्स जस्ट टेकिंग स्पेस इन योर मेन्यू. सो ओवर द मंथ्स देन लोग रिपीट ऑर्डर्स करते हैं या बोलते हैं कि कैन यू ट्राई दिस फॉर मी, और फिर जब वो उनको अच्छा लगता है वो रेकमेंड करते हैं और लोग ऑर्डर करते हैं. सो यू रियलाइज कि ओ दिस शुड बी माय परमानेंट प्रोडक्ट. So जैसे tiramisu is very technical and hard to make, and COVID के टाइम, लॉकडाउन के टाइम में I thought I will try it and it turned out nice. So I made limited quantity and मैंने 10 बनाए और मुझे 30 का ऑर्डर आया. So I realized कि लोगों को चाहिए tiramisu. उससे पहले मैं सोचती थी कौन बनाएगा, इतना सारा काम है, इतना टेक्निकल है, and you know like chocolate केक अच्छा बिक रहा है, why should I make it? But then I realized कि market is there. So menu is slightly a mixture of what you want to sell, what people want, and what is not available. Right. And is there any technical process? So just help me understand.
when you decide, okay, I want to keep this on menu, is there some like technical knowledge which is required, or there's a technical process on deciding the menu? You have to keep a calorie, I don't know, like nutrition count, this, that, all of it. In today's time, yes, I would say it would be a great add-on to let people know how much is your calorie count on each product. Right. But in terms of, I think the biggest thing with the menu is that आप उतनी ही चीजें मेन्यू पे डाल सकते हो जितनी का आप स्टोर कर सकते हो प्रोडक्ट एंड पैकेजिंग रॉ मटेरियल्स सो बेसिक रॉ मटेरियल सब केक्स का सेम होता है बट देयर आर सर्टेन थिंग्स दैट यू हैव टू बाय जैसे अगर फॉर एग्जांपल आप मेन्यू में आमंड केक और हेजलनट केक डालते हो तो अब आपको हेजलनट भी स्टोर करना है आमंड भी स्टोर करना है एंड यू हैव टू ऑलवेज रिमेंबर दैट इन अ होम सेटअप इट्स लिमिटेड स्टोरेज स्पेस आपको उसी स्पेस में सब कुछ स्टोर करना है योर रेडी केक्स आल्सो योर सर्टेन रॉ मटेरियल्स व्हिच हैव टू बी रेफ्रिजरेटेड सो योर मेन्यू हैज टू बी स्मार्ट इनफ टू गिव गुड थिंग्स येट support your storage. The storage is actually a it big is a point. Yeah, that you have because you have your packaging storage, you have your raw material storage, you have your order storage. It's not like आपने बना लिया then there's cooling time, then there's decoration time, then pickup time might be different. So you need a lot of space and storage. So your menu should be such that variation is on the top and base is similar. So how does how often do you change your menu now? Not too much actually. My best sellers always remain on menu. But when I make something new, instead of putting it on my menu, I post it on my foodie group, saying that I'm making because उससे फिर मुझे response भी समझ आता है whether people are liking the product, whether I should introduce it as permanent. But also आप एक बार मेन्यू बनाते हैं that's not your permanent menu because people do want more things so you have to keep upgrading it, changing it every few months, maybe 6 months and you have to be okay with it. And is it like a normal practice, like even in bakeries this happen, like their menu changes or everything happen? And generally how many products are there in your on your menu? I have about 6 or 7 cakes and I have two categories basically. I have cakes and I have main desserts. So my cakes are about 6-7 like I said and mini desserts I have a few tea cakes and a few cheesecakes and cupcakes. So I would say not more than 12 or 13 items on my menu. That's also a lot. Yeah, just because keeping inventory and everything it's very difficult. Now so we have decided the menu. We have baked cake. Now I think the most critical part is packaging, like how it really gets received by a customer. How important it is, how difficult it is, and what it takes. Like just tell us. Actually, I have never focused on packaging. I've always tried to keep it very simple. But I think it was you who made me realize that packaging is very important and I can already see the difference. So I think this is really true that people first see from their eyes and then from their heart and stomach. If your aesthetics are right, people will not think twice before ordering. So packaging is very important, but it has to resonate with what you want. आप पैकेजिंग जब डिसाइड करोगे तो अगर आप ज़्यादा लोगों से बात करोगे तो हर बंदा आपको एक डिफरेंट कलर डिफरेंट स्टाइल बताएगा बट जो आपका ब्रांड नेम है आप जो लोगो डिसाइड करते हो इट हैज टू बी इन सिंक विद दैट एंड यू हैव टू रिमेंबर एंड यू हैव टू बिलीव इन दैट इंस्टेड ऑफ changing it very often but yes it's extremely important. So how would you do it before and what changes have you made? So before I was using normal the most low cost cake box available, good quality but low cost with simple ribbons and my visiting card. But now over the years I have bought boxes which are my brand color and I've introduced customized ribbons with them and I've got a slightly more aesthetic boxes rather than just plain brown and plain white ones. But instead of printing the name on the box, I prefer the ribbons because different size of products require different boxes, and to store that many boxes becomes a problem. So, and in customized boxes with names, you need to have a big quantity to order for each size. Correct. So,
when you sell a product, right, the selling price of the product would contain a lot of things, right? Yes. So then, what is generally the contribution of, say, packaging? What is generally the contribution of raw material in your selling price? How generally it is defined, and generally what is the margin percentage? As a rule, your margin should be 30% Okay. and your cost should be 60%. That's how you work out your price. Prices. Okay. So, 30% margin and your packing cost comes to about 10 or 20% depending on what kind of packaging you use. Mm-hmm. And the rest is your cost of making. Yeah. So, your direct cost is about 25%. Your indirect cost, if you add in Mm-hmm. your electricity, your water, your labor, Right. then I would say 30-30 Mhm. sort of. So, Okay, that should be. yeah. And when you say packaging, it includes your courier services, like if you No. so that is separate. Yes. So generally, how does it happen? The customer pays it. Like, what is the general practice? Cakes are very delicate, हाँ. and I do not like to take responsibility for delivery because कुछ दिन ऐसे होता है जब आप बहुत cakes बना रहे हो, coordinating for delivery becomes a hassle, responsibility for delivery becomes a hassle क्योंकि अगर आप भेज रहे हो then cake खराब नहीं होना चाहिए, but अगर customer pick up कर रहा है, it's his responsibility on how he carries it. So a lot of customers like to book a delivery for cakes and they do it themselves and they pick up the cakes. या तो they pick up or they book a delivery. अगर वो मुझे बोलते हैं book करने के लिए because of personal reasons, तो मैं उनको I inform them that I am not responsible for this. I'm just doing it on your behalf, and I add it to the cost of the cake. So generally, it's like customers who would come and pick it up and get the Yes. It's nothing on. Delivery is a hard problem to solve in India, and अभी तक कोई ऐसी स्टार्टअप नहीं आई है जो डिलीवरी के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है अच्छी डिलीवरी के लिए. Like especially for things like cakes. Yes, especially for cakes. Food तो is sorted because Swiggy Zomato पे हो ही जाती है डिलीवरी.